Let's begin with details of the anti-terror operation, all-out operation to eliminate terrorists in the valley that's underway after Shopian encounter in Pulwama, in which again 3 terrorists were neutralized. And for the first time, we're showing you also images and videos of exactly how our forces narrowed down the exact hideout of these terrorists and then ensured that they were exposed. Let's play out for you exactly how these Pulwama terrorists met their end. We're getting closer and closer to also ensuring that we find the Pahalgam terrorists who are still out there, who are still hiding. Here's the footage from Pulwama. So you see, you can hear in that video essentially the sound of non-stop gunfire, of explosions. There's a picture on your screens on the right there from a drone, a surveillance drone that was sent in right after the terror hideout was busted, which confirmed that the terrorists were killed. And I'll bring in Arvind Oja, who accessed that footage for us. Arvind, हमको ये बताइए कि ये surveillance drone कैसे यूज किया है इस ऑपरेशन में? क्या उसी से कंफर्मेशन मिला था कि जो 3 टेररिस्ट उस हाइडआउट पे थे, they've all been neutralized? बिल्कुल अक्षिता, ये इंटेल इनपुट मिला था। सीआरपीएफ और एमआई ने इनपुट दिया था कि जो 3 जैश के लोकल टेररिस्ट हैं वो एक जगह पर छुपे हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आरआर और जो सीआरपीएफ है, इन तीनों ने ऑपरेशन चलाया। चूंकि ये त्राल का जो इलाका है ये काफी घना इलाका, घने जंगल वाला इलाका है, घनी आबादी वाला। उसके बाद सैनिटाइज करने के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। सुबह तकरीबन 6 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा है और अब टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि 3 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट वो इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। इंडिया टुडे ने फुटेज भी एक्सेस किया है, ड्रोन फुटेज, जिसमें 2 जो टेररिस्ट हैं उनकी डेड बॉडी वो दिखाई दे रही है। यहाँ ये बताना जरूरी भी है कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद कई टेररिस्ट के नाम सामने आए थे, जिसमें एक आसिफ जो लोकल त्राल का टेररिस्ट था उसका नाम भी सामने आया था। वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए। आपको बताऊं कि जो आसिफ है उसका घर भी आईईडी से उड़ाया गया था। जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था उसके बाद उसका घर भी आईईडी से उड़ाया गया था। तो आसिफ, आमिर और यायावर ये तीनों जैश के लोकल आतंकवादी हैं, जिनको एजेंसीज तलाश रही थी। इनपुट मिला था कि ये त्राल इलाके में है, जिसके बाद इनको घेरा गया सुबह और तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ जब इनकाउंटर चल रहा था और ये तीनों आतंकवादी मार गिराए गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है, खासतौर से आसिफ वो इस इनकाउंटर में मारा गया। अक्षिता, अरविंद, काफ़ी स्पेकुलेशन भी है कि आसिफ शेख जो है who's been neutralized in this particular encounter, उनका रोल पहलगाम टेरर अटैक में भी था। क्या उस पर कुछ कंफर्मेशन आया है? शुरुआत में ये बात थी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है अक्षिता कि आसिफ का रोल पहलगाम टेरर अटैक में था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 टेररिस्ट की पिक्चर रिलीज किया और जानकारी देने वाले पर 20 लाख रुपए इनाम रखा है। उसमें आसिफ की फोटो नहीं है, लेकिन एजेंसीज का मानना है कि जो 3 पाक टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक किया था उनको लोकल टेररिस्ट ने मदद की होगी। अब वो लोकल टेररिस्ट कौन है उसके बारे में पता चलाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, जब पहलगाम अटैक हुआ तो आसिफ का नाम काफी सरफेस हुआ था
उसकी पिक्चर भी सामने आई थी, लेकिन अभी जी। ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना होगा। ये जरूर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी कामयाबी है, क्योंकि आसिफ काफी वक्त से अंडरग्राउंड था। सोशल मीडिया पे आर्म्स एंड एमुनेशन के साथ पिक्चर सामने आई थी, और ये पता चला था कि ये जैश ए मोहम्मद से एसोसिएट हो गया। उसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसी इसको पास रही थी, और आज जब सुबह त्राल इलाके में इनकी मूवमेंट ट्रैक हुई, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद 2 घंटे तक ये एनकाउंटर चला, जिसमें आसिफ, आमिर और जो यायावर है, वो तीनों लोकल टेररिस्ट वो एनकाउंटर में मारे। Okay, Arvind, just stay on with us. I'd like to also bring in Mir Fareed on this broadcast. In a matter of 24 hours, Mir, we've seen 2 successful anti-terror operations. The first in Shopia, now in Pulwama as well. And right now, there's a big question about where the Pahalgam butchers are, where those terrorists are hiding. Are these all steps being taken in an effort to find those terrorists' hideout as well? Well, Akshita, we know that is the prime target. They are on the hit list as #1. Operations ongoing in various locations. They moved out of Pahalgam, which was the focus of these operations initially. But I can tell you now, sources tell us that probably it has now been confirmed that they're not in or around Pahalgam. So the radius of search has been taken to new areas, new forest areas. So the search for them is continuing. But in the meanwhile, as we had reported that these anti-terror operations are only going to get intensified post the Home Ministry clear directions. Range, a lot of thick vegetation, and in between there was a house which these Jash Carter were using as a hideout. But intel agencies got inputs about them. The area was searched in the morning, and as the forward party went close to these houses, they were greeted with gunfire, and the exchange of fire started. Till just half an hour back, the firing continued. Initially, we were told that 2 of them were gunned down, and then the third one changed his position to a neighboring house, and that's why he kept firing from inside. And it took some more time for the security forces to put an end to his resistance, and he was also shot dead. So these are significant operations, but I may add here, Akshita, the big challenge remains the non-local FTs who are here in the forest area in large numbers. They are the biggest threat because they have been causing casualties. Their hand has also been found, or the involvement in the Pahalgam attack, and they are a clear and present danger as far as Amarnath Yatra is concerned. So the focus remains on them, but the trickle in the form of local involvement or local cadre, we've been told multi-agency input says 10 to 15 are active. If you go back 5-6 years, they used to be in hundreds, but such is the security situation now locally that there are only a handful, and out of whom 6 have been killed in the last 3 days. Akshita? Okay, Amir, important point that you raised there about finding also, the foreign terrorists in hiding right now, and that will be priority #1 to weed them out before the Amarnath Yatra, and that will be the #1 focus for our forces right now. I'll request Mir and Arvind to stay on with us, but what we're seeing right now is a major crackdown on terror post-Pahalgam, as our forces in Jammu and Kashmir have intensified counter-terror operations across the valley. Out of 14 terrorists on the force's high priority hit list, 6 have been neutralized in recent encounters, marking a significant success in the ongoing anti-terror campaign. In the latest operation, 3 Jaish-e-Mohammed terrorists were killed in a fierce gunfight in Tral. Drone footage captured dramatic videos from that encounter site showing bodies of slain terrorists on camera. The sound of gunfire echoing non-stop in the background while thick plumes of smoke rose from the area, highlighting really the intensity of the operation.